Next topic is collinear vectors. Collinear vectors. First, let me write the definition. The vectors which either act along the same line or along parallel lines. The vectors which either act along the same line or along parallel lines are called collinear vectors. The vectors which either act along the same line or along the parallel lines are called collinear vectors. So वेक्टर अलजेब्रा में एक वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है? ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड ओवर इट. कोई सा भी वेक्टर होने दो, ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड ओवर इट. The length of this gives magnitude and the arrowhead gives direction of that vector. इसका जो लेंथ है, उस स्ट्रेट लाइन का जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करता है एंड द arrowhead indicates the direction of that vector. So जब कभी भी ऐसा एक एरो दिखा है मतलब वो एक वेक्टर ही है वेक्टर अलजेब्रा में. So the vectors which either act along the same line, एक लाइन में होना चाहिए, or along the parallel lines are called collinear vectors. What I mean to say, just imagine, यहां एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं, डॉटेड लाइन. एंड आई एम गोइंग टू इंडिकेट, यहां एक लाइन मैंने ड्रॉ किया इसके ऊपर में, ए स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड ओवर इट. A straight line with an arrowhead. So it's a vector. It's a straight line with an arrowhead over it. So it's a straight line with an arrowhead over it. It's a straight line with an arrowhead over it. So this is one vector, this is another vector. These two vectors are acting along the same line. Say this is A bar and this is B bar, isn't it? So here A bar and B bar, they are acting along the same line. So they are collinear vectors. अगर मैं ऐसा इंडिकेट करूंगा, just imagine, say this is a straight line with an arrowhead, like this. अगर मान लो just imagine here C bar and this is D bar. C bar and D bar, they are also acting, वो opposite direction है या same direction है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, isn't it? The vectors which either act along the same line, ये दोनों same line में है, ये दोनों भी same line में है. So here A bar and B bar are collinear, C bar and D bar are also collinear. अब दो parallel lines मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा. Like this. Suppose A bar is acting like this. A bar is acting like this. Say this is A bar and this is B bar. Here the two vectors. Vector algebra में a straight line with an arrowhead over it represents a vector. So ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. So here the two vectors are acting along the same line. Here the two vectors are acting not along the same line, they are acting along the parallel lines. Here A bar and B bar are collinear. Here A bar and B bar are also collinear. Here C bar and D bar are also collinear. ये भी collinear ही है क्योंकि same line में है. अगर मान लो ऐसा है,
just imagine this is C bar, this is C bar, and this is D bar. This is C bar and this is D bar. So here A bar and B bar are acting along the same line, they are collinear. C bar and D bar are acting along the same line, they are collinear. Here A bar and B bar are acting along the parallel lines, so they are collinear. Here C bar and D bar are acting along the parallel lines, so they are collinear. ये दोनों collinear है, ये दोनों collinear, ये दोनों collinear, ये दोनों collinear. मतलब so वो सेम लाइन में होने दो या पैरेलल लाइंस में होने दो, तो हम बोलते हैं दे आर कोलिनियर वेक्टर्स. टू वेक्टर्स विच ईदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग द पैरेलल लाइंस आर कॉल्ड कोलिनियर. अगर सेम डायरेक्शन में है, ऐसा सेम डायरेक्शन में, दे आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स और पैरेलल वेक्टर्स. सो हियर note two collinear vectors having the same direction, are called like vectors or parallel vectors. So here A bar and B bar collinear है ना, collinear है. Here A bar and B bar are collinear. So two collinear vectors having the same direction, they are acting along the same direction, are called like vectors or parallel vectors. So here A bar and B bar are collinear. collinear तो हैं, लेकिन वो like vectors भी हैं या parallel vectors हैं. ये दोनों like vectors हैं, ये दोनों भी like vectors हैं. Two vectors or two collinear vectors having the opposite direction, two collinear vectors having the opposite direction are called unlike vectors or anti-parallel vectors. So यहाँ पे जो फिगर मैंने ड्रॉ किया है, A bar B bar are collinear, C bar D bar are collinear, these two are collinear, these two are collinear, सभी के सभी collinear, ये दोनों collinear है, ये दोनों collinear, ये दोनों collinear, ये दोनों collinear, लेकिन these two collinear and these two collinear are like vectors or parallel vectors. So here these are, here A bar and B bar are like vectors or parallel vectors. Here C bar and D bar ये दोनों collinear हैं, ये दोनों भी collinear है, लेकिन collinear, the collinear vectors having the opposite direction are called unlike vectors or anti-parallel vectors. So here C bar and D bar are unlike vectors or anti-parallel vectors. ये है. So कब हम बोलेंगे दो वेक्टर्स कोलिनियर हैं? कोलिनियर, two vectors, the vectors which either act along the same line और पैरेलल लाइन, मतलब उनका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए. दो वेक्टर्स को हम कोलिनियर कब बोलेंगे? जब उनका डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए. दे शुड एक्ट अलोंग द सेम लाइन, isn't it? ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है, दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. सो ऐसा होगा तो भी दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, ऐसा होगा तो भी दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. ऐसा है ये दोनों वेक्टर्स, सो दे आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल लाइंस, ऐसा होगा तो भी दे आर एक्टिंग अलोंग पैरेलल लाइंस. सो
two vectors are said to be collinear if they are acting along the same line, like this or like this, like this or like this, like this or like this. उनको बोला जाता है collinear. So here all are collinear, but this collinear and this collinear, this pair and this pair, they are acting along the same direction. उनका direction same है. वो दोनों अगर ऐसा है या फिर ऐसा है तो ये भी कोलिनियर है, ये भी कोलिनियर है, लेकिन इनको बोला जाता है लाइक वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स. अगर उनका डायरेक्शन ऑपोजिट है, ऐसा इस तरफ ऐसा है या फिर ऐसा है, ऐसा होने दो या ऐसा होने दो, उस कोलिनियर पेयर को बोला जाता है अनलाइक वेक्टर्स या फिर एंटी पैरेलल. सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलिनियर. नेक्स्ट, हियर ओनली नेक्स्ट पॉइंट आई टेल, दैट इज coplanar vectors. Coplanar vectors. Coplanar का मतलब है सेम प्लेन में होना चाहिए. So let me write the definition. The vectors which act in the same direction, the vectors which act in the same plane, are called coplanar vectors. सेम प्लेन में होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर जस्ट इमेजिन ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है, प्लेन. यहां पे तीन वेक्टर्स को मैं इंडिकेट करूंगा. जस्ट इमेजिन ये बार ऐसा है, ये बार इसी प्लेन में है. A बार इज दिस. अगर मान लो B बार ऐसा है, B बार उसी प्लेन में है, B बार. जस्ट इमेजिन C बार ऐसा है, बार. हियर A बार, B बार, C बार, वो सभी के सभी एक प्लेन में है, isn't it? एक प्लेन में जो वेक्टर्स होता है, द वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन, मतलब दिस इज द प्लेन. ये बार ऐसा है, ये बार इज लाइक दिस, इस तरह है. B बार इज लाइक दिस, ऐसा है. C बार इज लाइक दिस. डायरेक्शन कुछ भी होने दो, एक प्लेन में होना चाहिए. सो द वेक्टर्स विच एक्ट इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड कोप्लानर वेक्टर. सो हियर A बार, B बार, C बार, they lie in the same plane, so they are coplanar vector. Here A bar, B bar and C bar are coplanar. Coplanar vectors. वेक्टर अलजेब्रा में किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है? एनी वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड ओवर इट. सो ए स्ट्रेट लाइन विथ एन एरो हेड ओवर इट कहीं पे भी दिखा है, मतलब वो एक वेक्टर है. सो दिस इज वन वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर, दिस इज अनदर वेक्टर. ऑल दीज थ्री वेक्टर्स दे लाई इन द सेम प्लेन, सो दे आर इन द सेम प्लेन and hence they are said to be the coplanar vectors. Next, co-initial vectors. Co-initial vectors. The vectors which have the same the same initial point are called co-initial vectors. The vectors which have the same initial point, सभी का initial point same होना चाहिए, एक ही जगह से start होना चाहिए. So this is one vector A bar, this is another vector B bar, this is another vector C bar. Don't you think all these vectors have the same initial point?
उनका इनिशियल पॉइंट एक जगह से स्टार्ट हो रहा है. सो हियर A bar, B bar and C bar are co-initial vectors. ये co-initial vectors हैं. Next one is coterminous vectors. Coterminous vectors. Coterminous vectors का मतलब है उनका terminal point all should terminate at same point. So the definition is the vectors which have the vectors which have the common terminal point are called coterminous vectors. For example, this is one vector A bar, this is another vector B bar, this is another vector C bar. Here A bar, B bar, C bar, they are terminating at same point. So here A bar, B bar and C bar are coterminous vectors. So this is all about collinear vectors. Collinear में parallel ये दोनों collinear parallel है, ये दोनों भी parallel है. So these are anti-parallel and these are anti-parallel. Isn't it? Unlike vectors, these are like vectors. So coplanar एक ही plane में होना, co-initial, coterminous vectors.